The diameter of moon is approximately 1/4 the diameter of the earth. So for that, let us suppose that diameter of moon is equal to Pm and diameter of earth is equal to Pe. And it is given in the question that the diameter of moon is 1/4 the diameter of the earth. Diameter of moon is 1/4 the diameter of earth. We know that the radius is double of half of diameter, or diameter is double of radius. 2 Rm for the radius of moon, Re for the radius of earth. 2 के साथ factor cancel हो जाएगा. So we have Rm is 1/4 Re. Now we have to check what fraction of the volume of earth is the volume of the moon. So we have to find the ratio of volume of moon and volume of earth. Volume of moon is 4 pi r square. This is 4 pi r e square. 4 pi cancel हो जाएगा. Rm is 1/4 r e. क्यों आएगा मैम? Volume is 4/3. Volume की रेशियो पूछी है. So 4/3 pi r cube. This is r e cube over r e cube. This is 1/64 r e cube over r e cube cancel हो जाएगा. So it is 1/64. अब 1/4 कैसे बचा? Rm की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 1/4 r e उसका क्यूब किया. So 1/64. नहीं, रेशियो में उन्होंने फ्रैक्शन. करें नेक्स्ट स्टार. Now next is how many liters of milk can a hemispherical bowl of diameter 10.5 centimeter hold? Area find out करेंगे कि volume? Volume. First we have to find the capacity of the hemispherical bowl. So write down. And the diameter of bowl is 10.5. 10.5 centimeter. Therefore, radius is equal to 10.5 divided by 2, 5.25. And the next is volume. Volume of hemispherical bowl is 2/3 pi r cube. Substitute the value and find it. Two by 3, 5 into 2 by 7 are 5.25. 3 times 5. So first we find it in cubic centimeters, then in liters divided by 1000. Can I next question?
Next question number 6. Question is, a hemispherical tank is made up of the iron sheet. Hemispherical tank है, iron sheet का बना हुआ है ये. A hemispherical tank is made up of iron sheet 1 centimeter thick. ये thickness कितनी है इसकी? 1 centimeter. If the inner radius is 1 meter, 1 meter means 100 centimeter. Inner part and the outer part. Inner part का radius कितना दिया हुआ है? 100 centimeter. 1 meter means 100 centimeter. और outer part का radius कितना हो जाएगा? 100 plus 1, 101. उसमें thickness add कर देंगे. Find the volume of the iron used to make the tank. हमें ये आयरन फाइंड आउट करना है, कितना आयरन यूज हुआ है इस टैंक को बनाने के लिए. हाउ टू फाइंड? आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, क्योंकि हमें ये बीच में फिलिंग देखनी है आयरन की कितनी है, तो उसके लिए वॉल्यूम फाइंड आउट होगा. वॉल्यूम फॉर दिस इज 4/3 by r cube. 4/3 hemispherical, this is hemispherical, so 2/3 pi r. R is 100 cube. Next volume V dash निकलो इसको. 2/3 pi capital R cube. So 2/3 pi 101 cube. Volume of iron used. Outer volume minus inner volume. टू बाई थ्री पाई कॉमन आ जाएगा. 101 क्यूब माइनस 100 क्यूब. 2/3 22/7. 1011 301 here minus 1. कैलकुलेट करो इसको, कितना आएगा? 22 2/3 22/7. दिस इज 30301. कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा इसका आंसर. जस्ट अ मिनट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 7. Seventh question is, find the volume of the sphere whose surface area is 154. Surface area of sphere is 154. What is the surface area of sphere? 4 pi r square. जिस कारण क्लास पीछे लगी हुई है. Sit straight. So it is 154 square centimeters. So 4 pi r square is 154. 4 22/7 r we have to find 154. So r square is 154 into 7 over 4 into 22. 7 आ जाएगा. So r square is 49 over 4, which we can write 7 over 2 whole square. So r is equal to 7/2, or you can write 3.5 centimeter. We have to find the volume. Volume is equal to 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube. 4/3 pi 22/7. R is 7/2. Now multiply it. 44 into 49 over 12. Find out करो इसे.
2156. ओके अभी 2 पे कटिंग हो रही थी इसलिए तो हो ही जाएगा 539/3. ठीक है 539/3 इसको चेंज करो 176 It is 179, 2/9, 2/9, 2/3, mixed factor. mixed factor 0.67 लिख दो चाहे 5 Next, eighth question is, see on your books, a dome of a building is in the form of hemisphere. From inside, it was whitewashed at the cost of rupees 498.96. If the cost of whitewashing is rupees 2 per square meter, find the inner curved surface area. Okay, how to find inner curved surface area? टोटल कॉस्ट को पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट से क्या कर देंगे डिवाइड वी गेट द इनर कर्व्ड एरिया एंड देन वॉल्यूम के लिए हमें पहले रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जितना इनर कर्व्ड एरिया आएगा 2 पाई आर बिकॉज दिस इज अ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू दैट कर्व्ड एरिया वहां से रेडियस आ जाएगा रेडियस आ गया देन वी कैन फाइंड द वॉल्यूम तो स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 8 total cost of whitewashing is equal to this is rupees 498.96 then cost of 2498 क्या बता रहे हो ये Total cost. मेरी बुक में 498.96 है 498.60. पुरानी बुक्स में 498.96 है so change the value to 4989.60 and the cost of whitewashing per square meter cost of 1 square meter is rupees 2 and 20 यदि change है so it is rupees 20 now find the curved area is equal to curved area for whitewashing Up to 49.98. Yeah. Mami, meter square transfer करेंगे centimeter square. square में meter square meter divided and tell me the answer 249.98. 249.99 नहीं चेक करो आंसर so square meter we know that the curved area of hemisphere is
कितना होता है 4 pi r square is to 49.48 to pi 22/7 r square. यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी. Find the value of r and then the volume. Volume is 2/3 pi r cube. तो रेडियस फाइंड आउट करो यहाँ से. कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है r की वैल्यू.